Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Arafat mujeeb from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter number 14. Chapter is about friction. This is my second lecture about this chapter. Today my topic is to discuss our rolling friction क्या होता है, friction due to water and air, and third is advantages and disadvantages of friction, and then what are the various ways in order to reduce the friction. We can say the friction concept को समझने के लिए यहाँ पे first of all, what is a rolling friction? It is a friction due to a wheel. When a wheel moves on the ground surface, it also there is also a friction that is known as the rolling friction. That rolling friction is very less than as compared to the limiting friction. Limiting friction in case of those objects which slides on the other objects, or we can say the limiting friction is greater than the rolling friction always. With the help of diagram, let us we have a consideration about this illustration by diagram first. It is a box laying on the tabletop. We are applying the force, applied force. Here the body is starting to slide, the body is sliding, and there is a limiting friction. Due to the limiting friction, the body will slightly to move when we applying a force on it. That means always the limiting friction is greater than the rolling friction. It is in the illustration second. Now I have to understand about the rolling friction. It is a friction caused by the wheel when it starts to move. Caused by a rim when it starts to roll. By the rollers when it starts to move on the ground surface. Rolling friction is very least as compared to the limiting friction. Limiting friction is associated with a body sliding on other body. Here if one body is the tabletop, other body is the heavy box. Heavy box here slides. Here is the limiting friction. Body slides. Now same body is on the wheels, on the rollers. On the rollers on the wheels it starts to move. On the wheels there is a rolling friction, and rolling friction is very least as compared to limiting friction. Therefore it is very easy to us to carry luggages, heavy boxes on the wheels, on the tires, on the rims, on the we can say the rollers, and it is very easy to displace a heavy objects on the wheels, on the rollers, rather than to slide this object on other body surface. Therefore here the body is rolling on the wheels, on the rollers, on the surface of the rollers. Rollers are in the ground. There is also a friction, but not so maximum as in case of limiting friction. It slightly allows the body to move on the other body. Here the body is rolling and we are applying the force on it. Here is there is little bit of friction, rolling friction. How rolling friction is caused? In the diagram first A part में मैंने दिखाने की कोशिश किया यहाँ पे causing friction here, depression on road. कभी कभार जो रोड होता है वो दब जाता है, जाने के बाद there is a depression by the load of the truck, load of the car, load of the material. This wheel exert pressure on the ground surface. Here is a depression on the ground surface. Here forms an inclined plane. इस inclined plane को overcome करने के लिए we have apply a force on this wheel. Due to the depression in the road, the wheel will not move. That move very low in speed. Therefore, to move this wheel on the when it causes a depression on the road, it becomes very tough to move the wheel to this roller. Then we have to apply a force to overcome this inclined surface formed in front of the wheel. तो इस तरह का एक फ्रिक्शन यहाँ जाहिर होता है. इस फ्रिक्शन
Yeah, the friction is caused by the roller, by the wheel. To overcome this depression, to overcome from this depression, we have to exert a force. इस wheel पे हमें force exert करना है, इस wheel को आगे हमें चलाना है. इस कदर रोलिंग फ्रिक्शन इज देयर. दूसरे फिगर में मैंने दिखाने की कोशिश किया कि कभी कभार जो व्हील होता है, गाड़ी का व्हील होता है, कार का जो टायर होता है, वो फ्लैटनेड होता है ग्राउंड सरफेस से. हवा कम, एयर प्रेशर कम होने के वजह से हियर इज अ डिफॉर्मेशन इन द व्हील एंड देयर इज अ contact. Then here is lorry surface contact on the road. Here also the wheel exerts here friction to some extent. Therefore जब गाड़ी के टायर में हवा कम हो तो गाड़ी मतलब स्लो स्पीड में दौड़ती है, उसकी स्पीड कम होती है by applying a force by the engine. और there is when the car vehicles air टायर्स में प्रेशर ज्यादा होगा, टायर्स में, व्हील्स में, तो बिल्कुल दौड़ती है गाड़ी, उसकी स्पीड बढ़िया होती है, बट कंट्रोल करना मुश्किल होता है उस वक्त. तो वहां व्हील में जो डिफॉर्मेशन आएगा, व्हील में जब डिफॉर्मेशन आएगा, उससे भी ये फ्रिक्शन, there is a friction caused in the roller, in the wheel, yeah, in the rim, in the ball. Then it when there is a deformation, तो फूक कम हुआ टायर्स में, जब भी फूक कम होता है तो गाड़ी उस वक्त कम स्पीड में भागती है. और हमें ऑप्टिमम प्रेशर, एयर प्रेशर मेंटेन रखना है टायर्स में, इसकी अच्छी खासी स्पीड रखने के लिए. क्योंकि यहाँ ये भी दूसरा केस है, हियर इज अ डिफॉर्मेशन इन द व्हील, जिसके वजह यहाँ पे है देयर इज अ फ्रिक्शन इन द wheel, in the roller. Then this is the concept of the rolling friction. But rolling friction is very least than the limiting friction. It is all about the rolling friction. But first cause is depression on the road, जिसके वजह से एक inclined प्लेन आगे इस टायर के आगे बनता है. तो इसको ओवरकम करने के लिए वी हैव टू अप्लाई ग्रेटर प्रेशर, ग्रेटर फोर्स to overcome this deformed road या depressed road. और दूसरा कारण ये होगा, जब भी हमारा व्हील क्या होता है, डिफॉर्म होता है, कम होता है, तो उसका कांटेक्ट सरफेस ज्यादा होता है रोड के सरफेस से, तो फ्रिक्शन ज्यादा होता है, तो गाड़ी का जो चलना है स्पीड कम हो जाती है, तो स्पीड अच्छी खासी नहीं होती है. तो देयर इज ऑल्सो एट टू सम ग्रेट एक्सटेंट देयर इज अ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन. एंड नंबर 1. नंबर 2, आपने ट्रेन्स में देखा होगा, इन द ट्रेन्स देयर इज द स्टील व्हील्स, दे रन ऑन द रेलवे लाइन्स. तो बड़ी स्पीड से वो जो रेल है वो भागती है, तो उसमें किसी किस्म की डिप्रेशन या डिफॉर्मेशन नहीं आ जाती है, तो बिल्कुल अच्छी खासी ट्रेन की स्पीड होती है ऑन द रेलवे लाइनर्स. देन देयर इज अ मिनिमम रोलिंग फ्रिक्शन इन द ट्रेन व्हील्स, इन द ट्रेन रिम्स. तो वो बड़ी अच्छी खासी स्पीड से दौड़ते. देयर इज अ नेग्लिजिबल रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन इज बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन ऑन रोड, और वी कैन से डिफॉर्मेशन इन द टायर्स, इन द व्हील्स. दिस इज ऑल अबाउट दैट. बट इन नटशेल we have two cases. Limiting friction is greater than which is associated with the sliding body, greater than the rolling friction. Here we can say rolling friction is very minimum than the limiting friction. ये दो केसेस हो सकते हैं. आगे चलेंगे हम. फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर एंड एयर. ये हमें फ्रिक्शन कॉज होती है पानी के वजह से भी, देयर इज अ फ्रिक्शन एंड वाटर, एयर से भी फ्रिक्शन होती है. तो पानी जो होता है, इट ऑल्सो कॉजेज द फ्रिक्शन, it also causes friction. Therefore our birds, we can say we design ships, we design the boats, yes, we design the we can say, if we talk about the following things, if there is a diver जो डाइव मारता है पानी में, डाइवर, तो उसमें क्या होता है, वो भी ये सारे जो ऑब्जेक्ट है ये स्ट्रीम लाइनेड बॉडी मेंटेन करते हैं. स्ट्रीम लाइनेड बॉडी, या हम इनको डिजाइन करते हैं स्ट्रीम लाइनेड. देन देयर इज अ मिनिमम रेजिस्टेंस टू a moving object.
मूविंग ऑब्जेक्ट को, ताकि ये एक्सपीरियंस फील करे दैट इट इज एक्सपीरियंस मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम वी कैन से रेजिस्टेंस यहाँ पे रुकावट, मिनिमम फ्रिक्शन की, मिनिमम फ्रिक्शन। तो उसको 1 मिनट, उसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है, मिनिमम फ्रिक्शन। दीज फॉलोइंग थिंग्स आर, they have streamlined body, these have streamlined body, ये एक है। तो therefore also the water flow of the water, they also cause the friction to the objects। 1 minute, हेलो, वो आता हूं मैं, वेट कर रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे also the air causes the, air also exerts friction। आपने देखा होगा जो meteors होते हैं, meteors होते in the sky, when they are falling, they catch fire। Why they catch fire? Because there is a friction due to the atmosphere। ये इसकी benefit भी, it catches fire and it burns off, ये जल जाता है। because of that there is a heavy rush when the meteors hit the they are tend to hit the earth's surface, and with the mass, with the cold atmosphere in the mesosphere, there is a greater friction between the meteor solid object, so it's a solid space rock, it causes, it have a burn and generates the heat that is enough to burn the meteors, and it burns off, it turns into ash before it hit the ground surface, earth's surface, we can say that this is number one. And number two, here you can say, if I took the piece of object here, I will allow it from the height, यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ, इस पेपर को, ये आराम से नीचे आ जाता है दिस पेपर, क्योंकि why it comes slowly down? Because of the air in opposite direction, there is a friction which resists this paper to come down. If I crumple this piece of paper now, I allow this, it will carry with no time, it will go down, because जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, उतना वो रेजिस्ट किया जाएगा बाय द एयर, बाय द विंड करंट, बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर। जितना सरफेस एरिया कम होगा, उतना विद द रश, विद द स्पीड वो नीचे आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मिनिमम नेग्लिजिबल सरफेस एरिया। तो यहाँ एयर ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर, देयरफॉर एरोप्लेन्स की बात हम कर लेंगे, बर्ड्स की बात हम कर लेंगे, या लॉन्चिंग रॉकेट्स की बात हम कर लेंगे। दे ऑल्सो हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी, ताकि हम उनके जो बॉडी है वो कॉम्पैक्ट करते हैं, कॉम्पैक्ट करके दे हैव टू एंटर इनटू द स्पेस, इनटू द एयर। तो वहां कोई भी किस्म की जितना भी हो सके एयर जो फ्रिक्शन ड्यू टू द एयर उसको मिनिमाइज करना है। तो मतलब सक्सेसफुली बर्ड्स have a fly in the sky, aeroplanes have a fly off in the sky, rockets are launching in the outer space, in the space there is a spaceship which is also goes up into the sky. They are designed, pointed at the head part, and they are shielded, covered, because they don't catch fire. Therefore जो रॉकेट्स हम बनाते हैं, स्पेस शटल बनाते हैं, उसका कैप होता है। कैप क्या होता है? वो दैट इज वेरी रेजिस्टेंट। जो स्पेस होता है उसका, जो रॉकेट जो होता है उसका कैप बनाया जाता है। ये कैप एज अ शील्ड होता है, ऐसे शील्ड। इट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज मिनिमाइज। ये कोनिकल बनाया जाता है, कोनिकल नंबर 1, और ये शील्डेड होता है। दिस शील्ड, if it catches fire, this space shuttle is then protected. It is then protected. This space shuttle is protected. Then it is protected. This space shuttle by this shield, by this cap,
it not allow the rocket or space shuttle to catch the fire when it goes at a high speed into the atmosphere. Therefore, in the same way, aeroplanes, birds, rockets or have a streamlined body to minimize the friction caused due to the moving air in the space, in the air. Then it is very to reduce the rate of friction due to the air. This is the also the gaseous, liquidus I mean water, gases I mean the air in the atmosphere exerts friction to the moving object. Therefore those objects by naturally, if we talk about the bird, they have compact size at the anterior region. आगे वाला उनका जो head होता है वो पॉइंटेड होता है, टेल जो होती है वो मतलब बिल्कुल फैली हुई होती है, साइड्स में लेटरल साइड्स की बात हम करें, साइड्स में बॉडी बिल्कुल कम्पैक्ट होती है. अगर हम फिश की बात हम कर लेंगे, इसकी एक्वेटिक एनिमल की जो फिश है, देखो उसकी स्ट्रीमलाइनेड बॉडी है, एट द साइड इट इज compacted and easily it passes through the water currents. Then there is a minimum chance of friction and they possibly swims in the water currents. What are the benefits of, what are the advantages of friction? Friction का होना भी अच्छा है. What are the advantages of friction? Advantages of friction. Advantages of friction ये है, हम because of the friction we can walk on the ground surface. We exert force by our soul and the ground surface, and then we can make the sit up forward. And this because of the friction, our shoes is with the sole, they are rough surface and they should be rough, they should not be slippery, and the ground should have roughness. Then it is very easy then to move. That means one way friction is necessary, other way friction is very bad to have. It is very destroy to have. That means अगर हम advantages की बात हम कर लेंगे, because of the friction we move on the surface of the ground, we walk on the surface of the ground. If the ground surface is slippery, then there is a chances of fall down. There is no type of friction, we cannot make the sit-ups to forward here. Number one. Number two is in the vehicles, in the cars, there is a tires, rubber tires, they have grooves. उनमें grooves होते हैं. These grooves are very important to have a friction with the road surfaces, then the vehicle smoothly run on the road surface. This is another. When you have a pulley, and the pulley you have a rope, this is a pulley, and in this pulley you have a rope, and this rope should be also rough. There is a rope, R-O-P, rope. This rope should be, it is a pulley, P-U-L-L-Y, pulley. The surface of the pulley should be rough, coarse, and this rope, it also should be if we apply here the force, it also should be, this rope also should be coarse. It should be coarse and rough. That means it can, then pulley also should be, the pulley surface जो इसका grow होता है वो भी rough होना चाहिए. Therefore this जो rope है जिसको हमने force apply किया है, rope को force apply किया है, then it will have, they don't slip on the surface of the pulley, they have a grip on the surface of the pulley, and then we are possibly to carry the load with the help of the pulley and rotate us on the axle. Then there is also advantage. Also you have the जो गाड़ी के brakes होते हैं, जिससे हम brakes होते हैं, जो brakes होते हैं, brake clutches होते हैं, उनका रबर पैड लगा होता है उनके सरफेस. जो हमारे जूते का जो सरफेस होता है वो रफ होता है, वो रबर होना ब्रेक्स पे ज्यादा जरूरी है. That should not be slippery. then हम ब्रेक अच्छे से नहीं दे पाएंगे, यहाँ पे भी ये important है. Also there we have a matchstick, we burn the matchstick and on the surface of the matchbox, so it burns because of the friction. That means friction to some extent have advantages, but in another way friction have also disadvantages. What kind of disadvantages is there associated with the friction?
disadvantages. What type of disadvantages are associated with friction? Disadvantage means energy is much more consumed in the friction. There is the friction in the body parts, in the machines parts. A lot of energy is needed to run up those parts. There is a lot of energy is consumed when there is a friction in the machinery parts. A machine does not run smoothly. Then to run smoothly we have to then it consume, there is a consumption of fuel that releases energy, then the energy is utilized. Here we can say that due to the friction it causes tear and wear in machine parts. It causes tear and wear, tear and wear in machines, in tools, in instruments, in machines. It causes tear and wear, फाड़ देता है, बिगाड़ देता है मशीन को because of the friction. Then the friction becomes inoperable, मतलब चलाने के आगे उसके शमकत नहीं रहता, efficiency कमज़ोर हो जाती है, efficient नहीं रहता है, वे टाइम के साथ डिग्रेड होता है, खराब हो जाता है. फ्रिक्शन रोक देता है मूविंग ऑब्जेक्ट को. स्पीड हम बढ़िया नहीं कर पाता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट की, हम सक्सेसफुल नहीं होते, उसकी स्पीड और एफिशिएंट कराए, उसकी स्पीड हम और हाई कराए, मोस्ट एफिशिएंट बनाए. तो फ्रिक्शन के कारण हम जो स्पेस शटल्स लॉन्च कर रहे इन द स्काई में, इन द स्पेस में जो रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं या मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं, उनकी बड़ी स्पीड नहीं रख पाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ड्यू टू द एयर, वाटर एंड देयरफॉर इट इज अ consuming process. It is it tears the process, it destroyed, decompose the material because of the friction. In a short we can say machines not run properly. The machines are not operating functionally properly. With time they are degraded and destroyed. In this way the frictions are the frictions there are disadvantages, and the frictions they have advantages also as well. We can see there are many. इससे पहले ये भी बताएं. अब यहाँ पे है, if there are disadvantages associated with the friction, how we can reduce it, how we can reduce the friction. Friction को किस तरह reduce किया जाएगा? We have some pointers here. If what are the ways? It is important question. By applying lubricants, by applying lubricants, that means oils, grease, powder, slippery powder. So by applying these